जी, welcome back. Can you hear me? अस्सलाम वालेकुम सर जी सर। जी, वालेकुम अस्सलाम. Yes, sir. Okay, we are going to start the last topic from this course. So, simulations of PDEs by finite difference formulations. ये सबको visible है ना? Is it okay? Yes sir. If you like, I can change the color. Okay. If we have some summary of the course so far, ताकि आप connection बना पाएं आज के topic से, we have already simulated PDEs. How? कैसे simulate किया था? PDE tool को use करके. With the help of PDE tool, right? Exactly. Okay. And the basis of this was finite element method. That is, of course, a full-fledged course, but I have given you the basics. You have some domain, you create the domain, you mesh it, discretize the domain, you refine the domain, you apply the boundary conditions, and then you solve over each element. And finally, you get the result by some post-processing. But what if you don't want to use PDE tool or you are not interested in finite element method? Because some of the students like to work with finite difference methods. So what is for them? वो क्या करेंगे? सही, तो ये हमारे आप आज के लेक्चर का और नेक्स्ट लेक्चर का ये टारगेट होगा. We will be given some partial differential equations. Even, of course, you can apply such schemes for ordinary differential equations as well. So what I mean by the finite difference formulation, whenever you have some differential equation, actually this differential equation represents some continuous process. Continuous process. How a system is changing with the passage of time or with the passage of some other variable continuously. But we are not able to solve every problem analytically. So we are not able to get a closed form solution in every case. If equation is nonlinear, coupled, and so forth, then what we do from differential equation, we get difference equations. Difference equations. So this is called discrete level. And differential equation represent a phenomena in the continuous form. So जब आप discrete level पे आ जाते हैं, then instead of having this differential equation, you have difference equations. And then you solve these difference equations to get some numerical result. I think मुझे वर्ड को ओपन करना चाहिए बिकॉज इस पे उतना फ्लो नहीं डेवलप हो रहा. Let me cancel this. Let us open some Word document. Ji, can you see this Word file? Yes sir. Okay. I was thinking Paint जो है उसमें ज़्यादा अच्छी तरह लिखा जाएगा, लेकिन No सर, इसमें ज़्यादा बेहतर लिखा जाता है. Word में ज़्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट है. Okay. So finite difference formulations. Okay, for this we need to have some
difference approximations for first order derivative. And for higher order derivatives. There is some issue. Okay, let us take first order derivative like du by dx. What you see in differential equations, you have some first order derivative, second order derivative, mixed derivative in PDEs. So you have to have some finite difference for फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस के साथ okay. फाइनाइट Du by dx is u at x plus h. This is through Taylor series, okay, minus u of x divided by delta x. And of course here not exactly equal, this will be approximation. Plus what you see is order delta x. When you apply Taylor series on u of x plus h, then you get this expression, and then there are terms that you truncate. This is called leading truncation error term, leading error term. That is of the order delta x. So this first order approximation is of the order delta x. Sometimes delta x को आप लिटरेचर में या बुक्स में h से डिनोट करते हैं. Then you have du by dx is equals to u of x plus h minus u of x divided by h plus order h. So this is first order. Let me draw the stencil of this. Okay. So if we have some unknown u, and this is the location I, this is the next location I plus 1, this is the backward location I minus 1. So du by dx will be equals to u of x plus h minus u of x divided by the gap delta x. So this is the gap delta x. To have some short notation, हम ये बार बार x plus h, x plus 2h इस तरह की डिस्टेंस नहीं लिख सकते, तो हम एक नोटेशन ले लेते हैं u of x I, इसको हम लिखेंगे ui. ठीक हो गया. u of x plus h जो कि नेक्स्ट नोड है, ui plus 1 u of ये है आपका x प्लस h, बेसिकली ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं u ऑफ i प्लस 1. तो जब भी आप ith ग्रिड की बात करेंगे, ith नोड ये हमारा करंट नोड होगा, करंट लोकेशन होगी. व्हेन यू मूव फॉरवर्ड तो आप i प्लस 1 इस नोड पे जाएंगे, और बैकवर्ड मूव करेंगे तो क्या होगा, i माइनस 1 होगा. विल टेल मी u ऑफ x प्लस 2h, इसको किससे रिप्रेजेंट करना चाहिए हमें, ui plus 2 के ui plus 2 ui प्लस 2. तो ये एक कॉमन सी हम यूज करेंगे नॉमेनक्लेचर आगे यूज करने के लिए. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे, दैट विल बी दिस. लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए बैकवर्ड अप्रोक्सीमेशन लें, if we say we don't want to move in the future, we want to predict the change, because derivative represents a change in the function, how this function is behaving at this node I. तो उसके दो तीन तरीके हैं. एक तो ये है कि आप फॉरवर्ड जाएं, देखें how is behaving in future, then you subtract the value at the present location and you take the grid size what is h. दूसरा ये है हमारे पास, अगर हम बैकवर्ड अप्रोक्सीमेशन करें, if we do backward approximation, at the moment I am at first order derivative, so u du by dx, this will be
the current location minus the backward divided by, again, gap is delta x. This is I, or you could say location x. This is x plus h. This is a 3-point stencil, okay? 3-point stencil. This is also called 3-point stencil. So इसको अगर हम इंडिसेस में लिखें ui minus 1 divided by, again, delta x or h. This is du by dx at, ये भी एक इसकी नोटेशन है, at x is equals to xi, ith location. Okay. This is again of order h. If you apply Taylor series, जो कि BSLR पे आप सीखते हैं, तो जो लीडिंग ट्रंकेशन टर्म है उसमें अंदर h इन्वॉल्व होगा. So this is a first order method. एक लास्ट अप्रोक्सीमेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए जिसको हम कहते हैं सेंट्रल, दैट इज बेटर देन बोथ ऑफ दीज, इन दोनों से बेहतर है वो. उसमें हम फंक्शन का फ्यूचर बिहेवियर भी देखते हैं और उसका पास्ट बिहेवियर भी देखते हैं, और वो ऑफ कोर्स एक बेटर प्रिडिक्शन होती है. और मैथमेटिकली यू कैन प्रूव बाय टेलर सीरीज, उसमें जो ट्रंकेशन एरर होगा वो ऑफ द ऑर्डर डेल्टा एक्स स्क्वायर होगा या ऑर्डर एच स्क्वायर होगा. एच इज ए वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट. अगर h स्मॉल हो तो उसका स्क्वायर क्या होता है? मजीद स्मॉल हो जाता है. इट मींस यू हैव गेन्ड मोर एक्यूरेसी. सो इसलिए हम कहते हैं कि जो सेंट्रल स्कीम है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए du by dx at x is equals to xi, एक केस में हमने फॉरवर्ड मूव किया था, एक केस में हमने बैकवर्ड मूव किया था, और ये गैप कितना था? h का. इधर भी गैप कितना है? h का. तो अगर हम एक बेहतर अप्रोक्सीमेशन सेंट्रल डिफरेंसिंग की चाह रहे हैं तो वो क्या होगा? u of x plus h, what this function is behaving after the current location. ठीक हो गया? मीन के फ्यूचर लोकेशन पे क्या है, फ्यूचर नोड पे क्या है. इफ दिस इज द टाइम, अगर ये h टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि नियरेस्ट पॉसिबल फ्यूचर में क्या वैल्यू है और पास्ट में इसका क्या कैरेक्टर था, पास्ट में क्या बिहेवियर था. अब डिवाइड क्या करना, कितना गैप हो चुका है? 2h का. इफ यू अप्लाई द टेलर सीरीज यू विल सी जो ट्रंकेशन एरर है वो ऑर्डर h स्क्वायर का है. सो दिस इज सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन. दिस इज ऑफ कोर्स बेटर. सो जब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे जहां फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, यू वुड बी हैविंग 3 चॉइसेस. कितनी चॉइसेस होंगी? 3. और इन चॉइसेस को देख देख के तो स्कीम्स बनती हैं जो कि अभी हम इस्टेब्लिश करना शुरू करेंगे. तो जब आपसे एग्जाम में या असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे कहा जाए अप्रोक्सीमेट द फर्स्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फॉरवर्ड अप्रोक्सीमेशन, बाय बैकवर्ड, बाय सेंट्रल, तो आपने उस हिसाब से फिर इसको मैनेज करना होगा. लेट अस मूव टुवर्ड्स द अप्रोक्सीमेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. क्योंकि हमारे पास जो हीट वेव और लैप्लास इक्वेशंस हैं दे आर जनरली सेकंड